Hello everyone, it's me Sidra from Yellow Light. Today I'm going to review Aina Beauty. So Aina Beauty is a new local brand and I'm going to test their products in front of you. I have used all of them जो मैं अभी try करने लगी हूँ and I pretty much like most of them. And one thing is their production is also in Pakistan, so I think that's huge. This review is going to be completely honest. I'll be honest with you guys about the products that I like and the products that I don't like. So first I'm going to try their tinted moisturizer. It's SPF 30 and I'm in the shade Ivory. This is how the packaging looks like. It has a pump. मैं ये product पहले भी use कर चुकी हूँ and one thing that I don't like about this product is this pump, क्योंकि इसमें से product easily नहीं निकलता. इसको आपको काफ़ी देर ऐसे से करना पड़ता है और फिर जाके वो product आता है. And sometimes it splashes all over. So I didn't like the packaging. Otherwise the product is so good and also I'm very happy with the color match. So I have some product on my hand. अभी मैं एक साइड पे एक ब्रश के साथ आपको यूज़ करके दिखाऊंगी और एक साइड पे अपनी फिंगर्स के साथ. ये क्योंकि एक टिंटेड मॉइस्चराइज़र है इस वजह से आपको इसके साथ कोई 10 स्टेप स्किन केयर करने की ज़रूरत नहीं है. एक तो ये मॉइस्चराइज़र भी है और इसके अंदर SPF भी है, तो आपके ये 2 स्टेप्स इसमें ही कवर हो जाते हैं. So this is how it applies. It applies beautifully and I really love the coverage. It has a nice medium coverage. मैं एक साइड पे लगा के आपको दिखाती हूँ. This is the kind of product जो मैं everyday use करना पसंद करती हूँ. Like you don't want to put a heavy base for your normal days. अभी मैंने एक साइड पे लगा लिया है. You can see the difference. इसका एक हल्का सा टिंट आता है and that's what I love about this. It's very lightweight, it's very sheer and it doesn't feel heavy on the skin. It is not tacky and I love the coverage. आपको इतनी ही कवरेज चाहिए होती है for every day and also you can build it up अगर आप इसको ज़्यादा लगाएं. ये लाइट टू मीडियम कवरेज तक जा सकती है और मुझे इसकी ये चीज़ बहुत पसंद है कि ये मेरी रेडनेस काफ़ी हद तक कम कर देता है. As you can see यहाँ पे अभी भी रेड एरिया है और यहाँ पे नहीं है. अब मैं इस साइड पे इसको एक ब्रश के साथ यूज़ करूँगी. आई पर्सनली लव वेयरिंग इट विद माई फिंगर्स. वैसे मैं कोई भी प्रोडक्ट अपने फिंगर्स के साथ यूज़ नहीं करती, कोई फाउंडेशन कुछ भी नहीं, बट स्पेसिफिकली दिस प्रोडक्ट आई लव अप्लाइंग इट विद माई फिंगर्स. लेकिन ये ब्रश के साथ भी बहुत अच्छा लग जाता है. अब इस एरिया में मुझे थोड़ी सी ज़्यादा कवरेज चाहिए तो मैं थोड़ा सा और प्रोडक्ट ले लूँगी. कैन सी it gives you a very natural sort of finish. So I absolutely love this product. ये मेरी तरफ से recommended है. बस इसके साथ आपने ये केयरफुल रहना है कि इसके साथ अगर आप अपनी स्किन पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रेप कर लेंगे तो ये उस तरह से वर्क नहीं करेगी. So whenever you are using a tinted moisturizer, go light hand with your skin care. Next thing that I have is this concealer and I am again in the shade Ivory. So it says Skin Finish Concealer. So this is what the packaging looks like and if you twist this you get the concealer, the wand. If you open this you get the blender. इसके साथ आप अपना concealer blend कर सकते हैं. I've been using this a lot, so let me show you. On one side I'm going to use the blender, on the other side I'm going to use my regular concealer brush. This is what the shade looks like. This is very lightweight again. The formula is not heavy. एक ही डिप में आपको इतना ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाता है कि मेरा तो पूरा फेस कवर हो जाता है, मेरे अंडर आइज और जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत होती है. So let's blend this side with the blender on top. So here we go. इसके साथ मुझे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया. The blender is nice to have it with you in case of emergency. For me, I think it blends really nice with the beauty blender or a normal concealer brush. So now it is looking very nice. But when I used this for the first time, it soaked up all of the product and I was like, मेरा concealer कहाँ गया? मुझे शुरू में तो इसके साथ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था, लेकिन अब मैं इसको काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ. अभी बहुत बेहतर blend हुआ है. It is looking fine. Okay, on the other side I am going to use the concealer brush that I normally use. This is how it looks like with the normal brush that I use. So should I take my words back on this because they are looking pretty much similar. अभी मैं खुद भी थोड़ी सी सरप्राइज हो गई हूँ इसको यूज़ करके because it worked really nice. So I think you need to give this thing some product to soak up. उसके बाद ये अच्छा काम करने लग जाता है. So taking my words back on this and I love this concealer. This is also recommended. It's very lightweight. It is not heavy. It gives you some coverage. So these products are all for everyday use, not for weddings or big events. So I think for everyday use this is
perfect. Next, I'm going to review their blushes. They have sent me 2 types of their blushes. One is this cream blush. This is my absolute favorite. I'll tell you why. And the other one is this hydrating lip and cheek tint. I love the fact that both can be applied on your lips and your cheeks as well. This one has more sort of gel formula. On one side of my face I'll use this, and on the other I'll use this. So this is in the shade Pinched, and this is in the shade Tangerine. This is like a bright pink sort of color. And one thing I'm telling you guys, this is so pigmented. I have made huge mistakes isko zyada laga ke. A little dot is enough for your entire cheek. Let me show you. This is what the applicator looks like, and I'm fine with this packaging. इसको मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, इसको मैंने 1 या 2 बार यूज़ किया, so इसका आपके सामने ही रिव्यू होगा जो भी है. I think this is enough. It is a beautiful shade though. Now you can see it has a really nice pigment. So this is blending beautifully. Look at the pigment. It's so pretty. It's really nice. I love it. Let's use this on the other cheek. I'll just put a little bit. This is also very pigmented. इसको आपने गलती से बहुत ज़्यादा नहीं लगाना. This is very 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 pigmented. This is my go-to. I am always carrying it in my bag. This is always with me. It has a really nice formula. It blends beautifully. As you can see, I am just in love with this. So this is the cream blush and this is the tint. I think right now this one is looking more beautiful than this, but this is for every day. Look at the packaging. This is so compact, and it even has a tiny mirror. It is so nice and so clear, and I just love the packaging. तो अभी मैं इसको हल्का सा अपने lips पे use करके आपको दिखाती हूँ. Look at that. So this is more dewy, this is more glowy, but this is giving a little matte finish. So if you like a glowy blush, you can use this, and if you like normal matte finish, you can use this. And if you pair it with a brown lip liner, this is just amazing. So these two are also recommended from my side. So the next product that we have is their सेटिंग पाउडर, एंड आई लव द पैकेजिंग बिकॉज जैसे आप सेटिंग पाउडर्स खोलते हैं एकदम मेस होता है, वो आपके मुंह पे आ रहा है, पाउडर उड़ रहा है, हर पाउडर के साथ ये मसला होता है. दिस इज़ वेरी क्लीन सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग. सो व्हेन यू ओपन इट यू गेट दिस पाउडर पफ विच इज़ नीट एंड क्लीन, जो कि एक्सेस पाउडर से भरा नहीं हुआ. देन यू ओपन दिस लिड और यहाँ पे आपको पाउडर मिलता है, और वो भी कभी भी मेसी नहीं होता क्योंकि इट हैज़ दिस यू शेप जो कि उसको वहीं पे रखती है उस पाउडर को. यहाँ पे भी पाउडर ऊपर नहीं पड़ा हुआ. देयर इज अनदर लेड जिसके ऊपर एक सॉफ्ट सी नेट है जिसको आप प्रेस करके इसके अंदर से पाउडर लेते हो, जस्ट लाइक दिस. दिस इज जीनियस. आई लव इट. अब हम बात करेंगे कि ये पाउडर है क्या. इट जस्ट से सैटिन स्किन पाउडर एंड व्हिच इज मीडियम टू लाइट कवरेज. आई थिंक let me just blend my concealer and use this excess powder. थोड़ा सा इस पे मैं ले लूँगी हाथ पे, and then I will press it into my under eyes. So this is how it looks. इसने काफी brighten भी कर दिया और matte भी कर दिया. But I have used this for longer period of times, और ये एज सेटिंग पाउडर काम नहीं करता. आगे आपका मेकअप उस तरह से सेट नहीं करता. बिल्कुल थोड़ी देर के बाद ही ना योर मेकअप विल स्टार्ट सेपरेटिंग. यू विल फील लाइक कि आपने जैसे पाउडर यूज ही नहीं किया. तो ये बस गुम हो जाता है थोड़ी देर बाद. लेकिन एक चीज है कि ये मेकअप उस वक्त बहुत अच्छा सेट कर देता है. उस टाइम हर चीज मुझे बड़ी फिट लग रही होती है. ऑल्सो दिस पाउडर हैज अ टाइनीएस्ट ग्लिटर पार्टिकल्स जो कि नजर नहीं आते. अगर आप इसको बहुत करीब से देखें तब आपको जाके वो ग्लिटर पार्टिकल्स नजर आते हैं. I don't think so it works nice as a setting powder, so this is not recommended from my side. While I was setting my face, I realized that I have oily skin, so maybe it doesn't work for oily skin girls. Maybe if you have dry skin, it'll work for you. Kyunki this is very light, very soft sort of setting powder. So I think this is for the dry skin girlies. I just finished my eye makeup, and let's move on to the next product. It's a balm highlighter. It's in the shade Golden Hour, and this is what it looks like. It has the same size as the blush. So this is the blush and this is the balm highlighter. This is what it looks like. It also has a tiny mirror. Love the packaging. This product again, so good. It is just a very light and subtle sort of a highlighter. From here it looks
sort of yellowish pale sort of color, but when you put it on your fingers it gives you a really beautiful shine. It gives you a sunset type of shade because it has orange, it has yellow in it, and it's just so beautiful. Let's just put it on my skin. और इसका नाम बिल्कुल सही है, इट शुड बी अ गोल्डन आवर, क्योंकि ये एक सनसेट सी एक वाइब देता है. इसके अंदर गोल्डन ऑरेंज इस तरह का शेड आता है. कैन यू सी, इट गिव्स अ रियली ब्यूटिफुल ग्लो. इट डजेंट मेक यू ग्रीसी. इसके नाम से ऐसे बाम हाइलाइटर्स का लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी कर देंगे. एंड इट गोज ब्यूटिफुली ऑन टॉप ऑफ पाउडर्स, क्रीम्स, एवरीथिंग. दिस इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स. और ये आपका मेकअप रिमूव नहीं करता. अंडरनीथ जो आपका मेकअप होता है ये रिमूव नहीं करता. इट जस्ट लुक्स सो प्रिटी. लेट्स पुट सम हियर, सम ऑन द नोज. सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज. If you're a person who doesn't like highlighters but some natural sort of glow on your face, I think you should go for this. 10 out of 10. So let's move on to the last product, which is this tinted gloss balm. This is what it looks like and I am in the shade Appleberry. This is again so good. मैंने अभी इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं वेयर किया, but what it feels on your lips is just beautiful. And they have a really nice sort of tint. Let me find a brown lip liner. Let me line my lips. I am wearing this lip liner by Sephora in shade Classic Beige. I still have this blush on my lips. Anyways, let's just try this. This is what the applicator looks like. It's very nice. It's sort of round and pretty. Ooh, it's beautiful. Do I have to say something? It's so pretty. You can wear it on its own. You can top it up with any lipstick, and the formula is really nice. It is not sticky at all. It has a scent to it and a really nice one, just like the name, Appleberry, something like that. I just love it. This is beautiful. So this is all. Let me open my hair. So this is the full face of Aina Beauty and I think I love it. I almost love everything except the setting powder. उसके अलावा मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लगी है. So what do you guys think? Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel so that I can make more videos for you guys. Bye. Also don't forget to follow me on Instagram.